Good morning, everyone. Am I audible? Yes. Okay. So let's start our next topic, which is regression analysis. Let's wait for 5 minutes. Students are joining. Regression analysis, it was given by Sir Francis Galton in 1877. And basically, it's regression analysis. It's a very popular technique in statistics, which is used for forecasting. So generally, we can say that it's a processor of functional relationship used for the prediction. So prediction, this relationship, this functional relationship, it can be simple relationship between the variables and multiple relationship between the variables. Simple relationship भी हो सकता है और ये multiple relationship between variables भी हो सकता है. So if we are talking about the simple regression, so we develop a functional relationship between two variables. So suppose we have two variables x and y, and we say that x influences the value of y. So x is called the independent variable. If x influences the value of y, then x is independent variable and y is dependent variable. So in simple regression analysis, only linear equations used for the prediction. Simple regression में क्या होगा? सिर्फ prediction के लिए linear equations का use किया जाएगा. Linear equations are used for prediction. And if we are talking about the multiple regression analysis, then we say that the variable y depends on number of variables. Suppose we have number of variables x1, x2, xn here. So this type of regression analysis is the multiple regression, and it can be linear and the curvilinear. So curvilinear relationship will be represented by the curve. Okay. So इसका अगर मैं एक एग्जांपल देखूं सिंपल रेग्रेशन का, so we say that suppose an economist which is interested in find out the relationship between income and the consumption. Doctor which is interested to know about the relationship between salt intake के बीच में relationship देखें, और हम कैसे देखें? Rise in blood pressure. So we have several examples over there, which is represented by the linear equations if we are talking about the simple functional relationship between two variables. Now we have regression equations here, and regression equations are of two types. First one is the deterministic regression equation. It's of two types. First one is deterministic, and the next one is the probabilistic. So if we are talking about the deterministic equation, it means which predicts the exact value of the dependent variable, whereas probabilistic means in which the various values appear for the given value. ठीक है, ये तो exact predict करेगा, और इसमें क्या होगा? Number of values appear for a given value. So
here we will study, we will discuss only about the deterministic equations. सिर्फ हम इसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे. So we have two lines of regression, two regression equations here. Regression equation y on x and regression equation x on y. Basic clear है यहाँ पर. What is regression all about? It's basically for the for prediction, for forecasting. इसके लिए इसका यूज किया जाता है and it is one of the most popular statistical technique. Is that okay? Should we proceed? Voice आ रही है मेरी clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So first regression equation is regression equation y on x, and the equation is of type y is equals to a plus bx. This is the regression equation y on x, which is obviously the linear equation also. So here you say that y is dependent variable. This is dependent variable. X is independent variable. A क्या होगा यहाँ पर? A means the intercept, y intercept means the value of y when, yes, A means it's the y intercept, y की वो वैल्यू जहां पर x 0 है, that is the value of y when x is equals to 0, and this b is the slope of our regression line, और इसको regression coefficient भी बोलते हैं. regression coefficient हम यहाँ पर y of x इक्वेशन की y on x की बात कर रहे हैं. so this is the regression coefficient y on x. b is the regression coefficient of y on x. आगे इसको डिनोट कर देते हैं b y x, ये भी इसकी नोटेशन होती है. it shows the regression coefficient y on x. तो जो ये इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन इस तरीके की, ये लाइन इस तरीके की होगी. आई एम सेइंग दैट इंटरसेप्ट a इज द इंटरसेप्ट हियर. ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है. दिस इज अवर regression line y on x. This is point A, y axis, origin, x axis, right? अगर यहाँ पे मैं दो पॉइंट्स ले लूँ x1 x2, तो ये जो यहाँ पर ये स्लोप होगा, this is our b, and this line is regression line. This is regression line y on x. Now, in order to compute the values of these a and b, we will use two normal equations here. No need to go on the proof. मैं in short आपको यहाँ पर बता रही हूँ, और इस पर बेस्ड हम ज़्यादा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली we will go through the problems. So in order to find out these values a and b, we are using the normal equations here, and these two normal equations are, if we take the summation both sides, then from this line we will get the summation of y is a n plus b summation of x. This is our first normal equation, and summation of x is इसी में मैंने x की और multiply कर दिया. So it's taking the summation of x on both sides, a summation of x plus b summation of x square.
So we are using these two normal equations for find out the constants. And after evaluating this, we have obtained Vyx. Vyx is the regression coefficient y on x, and its value is equals to r sigma x by sigma y. Do remember this formula. This is the formula for evaluating the regression coefficient y on x. This sigma x is the standard deviation of y. Sorry, this is y. This is sigma y by sigma x. Sigma y by sigma x. This is sigma y by sigma x. और अगर मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करती हूँ, then my this formula for evaluating the regression coefficient is converted into summation of x minus x bar, y minus y bar divided by summation of x minus x bar whole square. यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है. And one more thing, after further simplifying, we have obtained the value of v by x is equals to summation of xy minus summation of x summation of y divided by n summation of x square minus this is whole square by n. So in general, जब भी regression coefficient ये obtained करना होगा हमें, so either we will go for this one or this formula. ठीक है, डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं. तो या तो हम अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है प्रॉब्लम में तो इसके यूज से डायरेक्टली निकाल लेंगे. अगर डेटा गिवन है x और y, देन गो फॉर दिस वन, दिस फॉर्मूला. दिस इज Vyx and a is equals to y bar minus b x bar. These are the values for the coefficients. Y bar represents the mean, means summation of y by n. X bar represents summation of x by n. तो इसको मैं लिख सकती हूँ summation of y minus b summation of x divided by n. So these are the values for the coefficients here. तो यहाँ पर तो मेरी जो regression equation थी, we have regression equation y is equals to a plus bx और a की जो वैल्यू आई है इट्स y bar minus b x bar. तो ये जो इक्वेशन है, this is also be represented in the form y minus y bar is equals to b x minus x bar. अगर मैं a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ तो जो regression equation y on x है, it will be converted into the form y minus y bar is equals to b x minus x bar. This is the regression equation y on x. Is that okay? In the same way, we have a regression equation x on y. अभी हमने जो ये देखी है, this is the regression equation y on x. y on x की जब बात करी थी तो जो इक्वेशन की फॉर्म थी वो ये थी y is equals to a plus bx. This a is the intercept, b is the slope, which is the regression coefficient y on x. और इन कांस्टेंट्स को इवेल्युएट करने के लिए वी हैव यूज्ड दीज टू नॉर्मल इक्वेशंस. डायरेक्ट कंप्यूटेशन के हेल्प से जो कोएफिशिएंट्स की वैल्यू इवेल्युएट होकर आई है, दिस इज द वैल्यू फॉर b एंड दिस इज द वैल्यू फॉर a. और अगर मैं इस a को सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ इन द रेग्रेशन इक्वेशन, देन माय रेग्रेशन इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म. सो दिस इज द अदर फॉर्म ऑफ रेग्रेशन इक्वेशन y on x. Is that okay? Is this okay? Yes, ma'am.
Okay, now next we see the regression equation x on y. जस्ट अपोजिट हो जाएगा, x on y में इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू b y माइनस वाई बार. रेग्रेशन कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होएगा, b x y हो जाएगा. तो b x y हो जाएगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में x विल बी रिप्लेस्ड बाय y. That is the only difference between the regression equation y on x and x on y. Regression equation x on y. तो ये जो इक्वेशन होगी इट्स इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई. नाउ b इज, दिस इज द स्लोप, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म. सिर्फ x और y का रोल चेंज हो गया है. और ये जो इक्वेशन होगी इसकी सेकंड फॉर्म वो ये होगी जैसे प्रीवियस में हमने निकाली थी. सो इट्स इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू b y माइनस वाई बार. सो नॉर्मल इक्वेशंस यहाँ पर जो यूज करी गई है वो ये दोनों नॉर्मल इक्वेशन है. पहले तो हमने इसका सिंपली समीशन लिया है, समीशन ऑफ x इज इक्वल्स टू an प्लस b समीशन ऑफ y. देन समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू a समीशन ऑफ y plus b summation of y square. We have used these two normal equations for evaluating the constants, and from these equations we have obtained bxy. Now we are talking about the regression equation x on y. तो ये जो यहाँ पर हमारे पास slope है, this slope is bxy, x on y. So bxy is r, जो पहले वेरिएबल आएगा it's in the numerator and second one is in the numerator, in denominator. This is regression coefficient of the equation x on y and its value is r summation of x by summation of y. और दूसरी जो इसकी वैल्यू होगी अगर मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, देन दिस फॉर्मूला बिकम्स summation of x by summation of x summation of y by n divided by y square summation of y whole square by n. एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया है इवैल्यूएट करने के लिए. जो वेरिएबल बाद में डेट विल कम्स इन द डिनोमिनेटर. यू डू हैव टू रिमेंबर दिस. एंड a इज इक्वल्स टू x बार माइनस b y बार. ये इवैल्यूएट करने के लिए. इज दिस ओके? Is this clear? Yes, ma'am. Okay. Now we have some properties for the regression coefficients here. Regression. So इन दोनों लाइन से एक चीज आप देख सकते हो, ये जो सेकेंड फॉर्म है रेग्रेशन इक्वेशंस की, y minus y bar is b, x minus x bar and x minus x bar is b. It means ये जो दोनों लाइन्स हैं, these lines pass through their means. It shows that these two regression equations pass through their means. So regression equation y on x means y minus y bar is equals to byx x minus x bar. और मैं इसको लिख सकती हूँ r sigma y by sigma x minus x bar. Or we can write it like y minus y bar divided by
sigma y is equals to x minus x bar divided by sigma x when R is the correlation coefficient, R is equals to plus minus 1. In the same way, if you see that regression equation, this is on y on x, regression equation x on y. अगर मैं x on y की बात करती हूँ यहाँ पर, तो x on y के लिए जो इक्वेशन है वो मेरे पास है x minus x bar is equals to bxy y minus y bar और sigma x by sigma y minus y bar x minus x bar. Or so you see that if the value of the correlation coefficient is plus minus 1, then these two regression equations are same. These two regression equations coincides. So this is also the important property of the regression equations. It will be coincide in the case when the correlation coefficient between them is plus or minus 1. Then R is equals to plus minus 1. So these two lines coincide. Next you see that I'm writing down some more properties for the of the regression coefficients. Properties of regression coefficients. Regression coefficients कौन से मेरे पास vyx and vxy. This is the regression coefficients y on x and this one is x on y. So first property here is product of two regression coefficients will never exceed 1. Product of, do remember these properties, it will always use in solving the problems also. ठीक है, तो कभी भी जब हमें सपोज दो इक्वेशंस दी हुई हैं और उन दोनों इक्वेशंस में से ये नहीं पता है कि कौन सी इक्वेशन y on x है, कौन सी इक्वेशन x on y है, तो विद द हेल्प ऑफ रेग्रेशन कोएफिशिएंट्स हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन y on x है, कौन सी x on y है. क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से हम लोग स्लोप फाइंड आउट करेंगे और स्लोप का प्रोडक्ट चेक करेंगे. अगर उसका प्रोडक्ट 1 से ज्यादा आ गया है तो हमने जो चॉइस ली है, एजम्पशन लिया है, वो गलत है. Because our property here is the product of two regression coefficients will never exceed 1. हमेशा 1 से प्रोडक्ट कम होनी चाहिए इन दोनों की. Product of two regression coefficient will never exceed 1. Second property is R is equals to square root of dyx into dxy. This is the relation between regression coefficient and the correlation coefficient. Third property is both regression coefficients will always have same algebraic sign. मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होगा. will always have same algebraic sign. Fourth property is regression coefficients are
independent of change of origin but not of scale. Means addition और subtraction से कोई impact नहीं पड़ता, but if we are talking about the multiplication and division, then it's not of the scale. उससे इस पर impact पड़ेगा. And fifth property, कभी-कभी एग्जाम में प्रॉपर्टीज भी पूछ ली जाती हैं, तो do remember these properties. Mean of dxy plus dyx, mean of these two regression coefficients will always be greater than equals to r. Mean मतलब mean of, इसको हम बोल सकते हैं mean of two regression coefficients, mean of dyx and dxy will be more than or equal to correlation coefficient R. So these are the important properties for regression coefficients. Is that okay? Let us see the problem. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, ma'am. Now suppose क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है यहाँ पर, compute the regression coefficient by of equation x on y and y on x from the following data. Compute the regression coefficient compute the regression equation, not coefficient. Regression equation of x on y and y on x from the following data. This is the example of rate of interest in the housing loan, and here you have to estimate the housing loan amount if the rate of interest is reduced to 8%. So this is the data we have taken from the problem. So solution, suppose मुझे ये data set दे रखा है x and y, and 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, and the corresponding value of y here is 3, 8, 20, 35, 40, 44, 50. तो अगर मैं x on y की बात करती हूँ, x on y मीन्स इक्वेशन क्या है मेरे पास, x on y वाली इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a प्लस by. तो मुझे ये दोनों कोफिशिएंट्स यहाँ इवेल्युएट करना है. x on y में जो रेग्रेशन कोफिशिएंट है इट्स dxy
एंड बी एक्स वाई की वैल्यू आपको पता ही है, अभी मैंने इससे पहले बताई है, समीशन एक्स समीशन वाई बाय है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाय सॉरी दिस इज बाय एन, और ए को इवैल्यूएट करने के लिए होगा एक्स बार माइनस बी वाई बार। इन द सेम वे जब हम y ऑन x इवैल्यूएट करेंगे तो y ऑन x इवैल्यूएट करने के लिए जो रेग्रेशन इक्वेशन है हमारे पास y इज a प्लस बी एक्स, और a को इवैल्यूएट करने के लिए अपोजिट हो जाएगा y बार माइनस बी एक्स बार, एंड द रेग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x मीन्स दिस इज dy x। तो इफेक्टिवली अभी मुझे जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, वी नीड द समीशन ऑफ x समीशन ऑफ y समीशन ऑफ y स्क्वायर समीशन ऑफ एक्स वाई, इन सब चीजों की मेरे को रिक्वायर्ड है। तो मैं नेक्स्ट कॉलम जो बना रही हूँ, आई एम टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई देन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, सिर्फ इन्हीं चीजों की इन्हीं प्रोडक्ट्स की मेरे को रिक्वायर्ड है। एक्स वाई जब मैं इवेल्युएट कर रही हूँ तो इट्स 42 13 into 8 is 104. This is 220. 35 into 10, 350 is 360. 44 multiplied by 8 is 352, and 750, this is 350. Find out the summation of x, summation of y, summation of xy, summation of x square, summation of y square. X square means 14 multiplied by 14, this is 196, 169, 121, 10 multiplied 10, 100, 81, 64, 49. And y square means this is 9, 64, 400, this is 1225, 1600, 44 cross 44 is 1936, and 50 cross 50 is 2500. So find out these values and substitute it in the formula. You will find out, you can find out the regression equations y on x and x on y. मैं लिख रही हूँ यहाँ पर डायरेक्टली, एंड यहाँ पर मेरे पास टोटल 7 है, 7 डेटा सेट इज गिवन। तो समीशन ऑफ x जो आएगा it's 72, this one is 200, summation of xy is 1778, summation of x square is 780, and summation of y square is 7734. Now y on x की बात कर रहे हैं, so line is y is equals to a plus bx, और byx is equals to summation of xy minus summation of x summation of y by n summation of x square summation of x का whole square by n. इसमें substitute कर दो, you will get the value of regression coefficient y on x, and a is equals to, इस वाले केस में जो a की वैल्यू होगी वो होगी y bar minus b x. So y bar means summation of y by n means 200 by 7, and byx जो यहाँ से इवैल्यूएट होकर आएगा, यहाँ से जो इवैल्यूएट होकर आएगा, x bar means 72 by 7. So in the way you can evaluate the coefficients and then substitute it in the equation. और इसी तरीके से हमें x on y इवैल्यूएट करना है। x on y के लिए भी मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा था अभी पहले, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप x on y इवैल्यूएट कर सकते हैं। Is that okay? Is that okay कि regression coefficients, regression equation हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? Yes, ma'am. Okay, so I'm writing down one more problem. You just try it yourself. और उसके बाद next class में इसी पर कुछ और problems करनी है, तो regression complete हो जाएगा। कुछ और problems इस पर regression पर हम करेंगे in the next class। और इसी से related मैं एक और problem आपको लिख रही हूँ, तो आप उसको try कर लेना अपने।
Please write down your attendance. एक डेटा सेट दिया हुआ है, 23, 24, 25, 26, 28. It represents the age of some patients, and this is lower limit of BP. Patients का ये डेटा है, तो इनकी एज के अकॉर्डिंग इनका डेटा 29, 31, 35, 40, and BP ranges 65, 60, 62, 70, 70, 73, 75, 83, 90. Assuming age as X and BP as Y. So calculate the two regression equations and also estimate the BP if the age of the patient is 38 years. Okay. So just try to solve it. इसी तरीके से करना है जैसे पहले था, डेटा हमको ये दे ही दिया है और के अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व करो. ठीक है. Calculate two regression equations and also estimate the BP if age of the patient is 38 years. Clear? Any problem? Is this okay? Yes, ma'am. Okay. Yes.